Welcome students, welcome to this online platform. So in the previous class we have studied about the plasmid vectors, different types of vectors, their characteristic, and particularly the plasmid vectors we have started. Now I will continue with the plasmid vectors. So plasmid vectors, as I have told you in the last class, these are extra chromosomal DNA particles found in prokaryotic organisms or bacteria. Plasmids have their copy number in a bacterial cell. They may be in one single plasmid or two or three, or they may be of hundreds or thousand types. That is called copy number of plasmid. And plasmids have specific antibiotic resistance gene, so that they can give resistance to that bacteria for against a particular antibiotic. So आम प्लाज्मिड विषय में लास्ट क्लास पढ़ी प्लाज्मिड्स act as a suitable vectors. So plasmids are particularly isolated from the bacteria cell, prokaryotic cell. The plasmid characteristic of the naming विषय आज देखिबा, how the plasmids are named, characterized, and how they are used in recombinant DNA technology. So plasmid माने जेहेतु बैक्टेरिया भीतर देखा जाउछंती, से प्लाज्मिड मानकर नेमिंग तार केमिति ना दियाइछि ताको देखिबा. सो तापे मोटे एग्जांपल देछि PBr322 जोटा गोटे फास्ट सक्सेसफुली isolated and prepared plasmid which is successfully used or widely used in recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology से जो गोटे particularly successfully or widely used plasmid तार एठी एग्जांपल चित्र मु दे देछि, you can see here. So तार नाम होछि PBr322. Let me show you with the example of PBr322. So here P stands for the plasmid. जेते plasmid सब अछि समस्त आगर थिबा P, small p. Small p stands for plasmid. Br, these two terms are the name of a scientist. B for Bolivar, R for Rodriguez. Bolivar and Rodriguez, these are two scientists who have prepared this plasmid, developed this plasmid in their laboratory. तांका laboratory से माने plasmid को develop करथिले, सेतिपय ता ना आइछि PBr322 is a number they have given. तांकर से मन रखिया पे किछो नंबर दैछन, that is called 322. So PBr322 is a plasmid ना. सेमति अलगा किछो आउट plasmid एग्जांपल नबा PUC. It also have a number. So PUC, P for plasmid, UC for University of California. So California University laboratory develop होइथिला, सेतिपय ना आइछि PUC. So बोले जो फर्स्ट लेटर टा रहला plasmid पे P, तापर सेकेंड और थर्ड लेटर दीटा कैपिटल ले लिखा है. सेकेंड एंड थर्ड लेटर दिस टू कैपिटल लेटर्स they symbolize about the persons who either discovered this plasmid or developed these plasmids, or a place where the plasmid is designed or developed. So in this way the plasmid names have been assigned, and the number they have given, the developer they given a number for identification of the plasmid, that is also given in the last. So let me show you the PBr322 रा आउ कोन characteristic अछि. So PBr322 पाखरे दीटा antibiotic resistant site अछि, which is required, which is a characteristic of a suitable vector जोटा characteristic. Then PBr322 रे there are 8 coating sites for 8 different antibiotics, 8 different restriction enzymes. 8 different restriction enzyme पे coating site अछि. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So ये जो एरोड origin of replication अछि, ori लेखा है, ori is the origin site. Replication of the plasmid vector starts from this point, so it's the origin. Then এই প্লাজমিড ভেক্টরটাকে আমি widely use করছু in case of E. coli. These are extraction of E. coli. E. coli bacteria ভিতরে আমি প্লাজমিডটাকে suitably PBr322 को suitably insert करि परिबा. एबो E. coli जेतो गोटे कॉमन, E. coli गोटे कॉमन host organism. EcoR1 is a common restriction enzymes. So ame a PBr322 is a good combination for this set. So the PBr322 plasmid plus E. coli bacteria
plus EcoR1 enzymes. This is a good combination which can used in a recombinant DNA technology. So plasmid पर आम देखा तापर अलग कौन सब अच्छी आउ कौन सब अच्छी सो देखा तापर अच्छी cosmids and phasmids. So cosmid of phasmid कौन ना cosmid of phasmid तार ना रुही हम ताको बुझीजिबा आमे किसी बैक्टीरियोफेज जो विषय आम आगु पढ़ी बैक्टीरियोफेज जे भाइरस ऑफ अटैकिंग थ्रू द बैक्टीरिया को जो भाइरस अटैक कर बैक्टीरियोफेज सो से बैक्टीरियोफेज भाइरस ताकू मध्य आम वेक्टर भाव में यूज कर पार्चु जेहेतु भाइरस गोटे बैक्टीरिया आउ गोटे बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर सो किसी जीन को आम भाइरस द्वारा आम ट्रांसफर कर दे पारिबा सी मत बैक्टीरिया जीन को पड़े जाई परिबो होस्ट ऑर्गेनिज्म को जाई परिबो सो भाइरसेस हैव ए साइकिल लाइफ साइकिल लाइटिक साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल सो लाइटिक साइकिल बा लाइसोजेनिक साइकिल से माने बहुत समय पर्यंत बैक्टीरिया भीतर रुहंती सेति पई लाइसोजेनिक साइकिल द्वारा आम भाइरस द्वारा किसी जीन को ट्रांसफर करिबा ताले से बैक्टीरिया भीतर जेहेतु बहुत समय रहिबे से तार जीन प्रोडक्ट मध्य बैक्टीरिया भीतर से बाहर करि पारिबे देन आमे ताको आउरी सुइटेबली यूज करछु भाइरस को किछि पार्ट आ प्लाज्मिड रो किछि पार्ट ताको मिसै देइछु सो भाइरस रो जो अछि कॉस पार्ट किछि ता वायरल डीएनए रो किछि कॉस पार्ट और ट्रांस पार्ट अछि कॉस पार्ट ताको आमे सुइटेबली यूज होति करिबा प्लाज्मिड सहित से गला कॉस्मिड आउ कॉस पार्ट को छाड़ दे आमे नॉर्मली यदि गोटे वायरल डीएनए सहित किछि प्लाज्मिड रो डीएनए को इंट्रोड्यूस करिकरी यूज करके हाइब्रिड करके तैयार करि पाइ एटा जो फेजमिड then artificial chromosomes are artificial designed. These are designed for suitable host cell आमे किछि suitable host cell पई आमे artificial मध्य किछि डिजाइन करिचो किछि वेक्टर्स ताको कहला artificial vectors. So artificial vectors विभिन्न प्रकार सेल पई अछि हमर जो अछि बैक्टीरिया सेल पई ताको कहला बैक्टीरियल आर्टिफिशियल सेल बा शॉर्ट ले हम ताको लिखि परिबा बैक ह्यूमन सेल mammalian cell बा ह्यूमन सेल पे आमे ताको लिखि परिबा ह्यूमन आर्टिफिशियल सेल और mammalian आर्टिफिशियल सेल बा मैक और हैक. देन ईस्ट इज ए फंगस ईस्ट को मध्य आम होस्ट ऑर्गेनिज्म भाव में यूज करूँ वाइडली यूज करूँ ईस्ट को मध्य सो ईस्ट पे मध्य किसी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम डिजाइन होती जे कि ईस्ट सेल भितर मध्य से ताको आम किसी डिजाइन डीएनए को नहीं ता भितर रखिपर ताको कहला याक. So these are three types of artificial chromosomes which are widely used and popularly used in recombinant DNA technology. Then TI plasmid, it is a very narrow specific. It is particularly useful to transfer genes, to specific genes, to a plant, a nitrogen fixing through a nitrogen fixing bacteria, Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens जेहेतु nitrogen fixing bacteria और particularly ये जेहेतु किसी plant मानो को से affect करुची infect करुची so से plant मानो को पाखको तार plasmid जो से TI plasmid से TI plasmid द्वारा हमें किसी जीन को मतलब भीतर परे पारिबा जे कि plant को affect करि पारा plant रे जेतो माने ये किसी plant रे tumor करंती so plant रे जो tumor करची माने plant रो जीन को से अफेक्ट करुछि सो किछि जीन मध्य आमे नै परबा जे कि प्लांट रो जीन को मध्य अफेक्ट करि परबा प्लांट रो जीन को चेंज रिकम्बाइन करि परबा हम डिजायर्ड जीन टा को प्लांट जीन भीतर रखि परबो एवं से प्लांट रो मध्य किछोटे ट्रांसजेनिक प्लांट हि जिवो सेटा उटा हाइब्रिड प्लांट. Then retroviruses are used, as I have told you in the previous class. Retroviruses are used to transfer RNA because they are RNA viruses. So RNA को आमे transfer करियो चाहुथिबा so it's very rare occurrence. So these retroviruses may be useful. So ये गल different types of cloning vectors. Cloning vectors पर आमे देखिबा या पर आउ कोन अछि ना cloning vectors पर host organism हम जोटा देखले host organisms जहाँ भीतर आमर डिजायर्ड जीन टा जहाँ भीतर काम कर इनसर्ट कर सो आमर क्लोनिंग वेक्टर देखिए आम जो डिजायर्ड जीन को आम रिकमेंड करके पठेलु कौटी पठेलु ना होस्ट ऑर्गेनिज्म भीतर को पकेलु सो होस्ट ऑर्गेनिज्म भीतर आमर डिजायर्ड डीएनए
ता भितर रहिला आउ होस्ट ऑर्गेनिज्म धर पर्टिकुलरली आम गोटे ई कोलाई बैक्टेरिया को आम होस्ट ऑर्गेनिज्म नेलु ई कोलाई भीतर को आम आम डिजायर जो इंसुलिन लास्ट प्रीवियस क्लास रे कहूली इंसुलिन जीन को भीतर इंट्रोड्यूस जीन गला ई कोलाई भीतर को ई कोलाई को आम कल्चर कलु ई कोलाई बैक्टेरिया गोटे बैक्टेरिया दीटा बैक्टेरिया होची 2 ରୁ 4 बैक्टेरिया 4टारू बाइनरी फिजन 4टारू 8टा 8टारू 16टा 16 ରୁ 32 32 ରୁ 64 सो एक्सपोनेंशियल वे रे से माने मारी जिवे एक्सपोनेंशियल वे ताको सफिशिएंट खाद्य दिया जे न्यूट्रिएंट एक्सपोनेंशियल वे रे से मानक नंबर मल्टीप्लाई जिवो सो जतले एते प्लेंटी ऑफ बैक्टेरिया हे जिवे आमे प्लेंटी ऑफ बैक्टेरिया हे गेले आमे ता भितरु हमरो जीन प्रोडक्ट ता भितरु बाहर करि परिबा आमर जो इंसुलिन जीन प्रोडक्ट आम प्रचुर परिमाण बाहर कर लास्ट आम थिला बी सी गला होस्ट ऑर्गेनिज्म लास्ट आम थिला डिजायर डीएनए होची आम टार्गेट डीएनए जो टार्गेट डीएनए को आम पर्टिकुलरली यूज करूँ जमी इंसुलिन होची आम टार्गेट डीएनए सो आज क्लास में ये आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा व्हाट आर द स्टेप्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी कौन कौन स्टेप्स यूज हुए नेक्स्ट क्लास यूज करवा थैंक यू।